everybody, welcome back to FG Locket. Today we have Advocate Prerna Deep with us. Thank you so much मैम अपने टाइम निकाला आने के लिए. मैम का बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एट सच अ यंग एज आई वुड से कि काफ़ी कुछ मैम ने किया है अब इन हर ओन जर्नी. तो मुझे लगता है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम से इस पॉडकास्ट के दौरान में. मैम ने अपना जो बैचलर्स किया था इट वाज इन इंग्लिश लिटरेचर मिरांडा हाउस से. उसके बाद में मैम डिड हर LLB फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर. उसके बाद मैम वेंट ऑन टू यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग. शी डिड हर LLM इन क्रिमिनल एंड मैम का काफ़ी एक्सटेंसिव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी रहा है और वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है. रिसेंटली मैम वॉज अ जुडिशियल क्लर्क एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अभी जस्ट नाउ शी इज़ एन अकेडमिक फेलो एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. Congratulations, Anasir. Thank you. Thank you, Apai. And I will have to say that this is through LinkedIn that ma'am actually agreed to come to us. So that's very great of you. Thank you so much, ma'am. You're welcome. So ma'am, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि LLB यहाँ से CLC से करने के बाद में आप you went to the UK to the University of Edinburgh. So आपने कैसे डिसीजन लिया था that you have to go to this particular university and you have to do this particular LLM का domain you chose? So, I mean, firstly, मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि LLM just after LLB करना चाहिए या पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए. बट देन आई रियलाइज्ड कि जो मेरा खुद का ड्रॉबैक है कि अगर एक बार ज़्यादा काम कर लिया आई माइट नॉट बी एबल टू गो बैक टू स्टडी. एंड LLM काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आवर्स. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो राइट आफ्टर माई LLB डायरेक्टली टू LLM. देन आफ्टर दैट मुझे पता था कि मुझे क्रिमिनल लॉ में ही करना है. अच्छा. दिस आई हैड डिसाइडेड बिकॉज आई रियली इंजॉयड क्रिमिनल लॉ. सो आई वॉज लुकिंग एट यूनिवर्सिटीज़ इन क्रिमिनल लॉ इन UK. UK इसलिए बिकॉज सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह यूरोप और UK में होती है कंपेयर टू USA. अच्छा. सो आई न्यू आई वुड ओनली गो इफ़ आई गेट अ स्कॉलरशिप. तो उस हिसाब से मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया. आई लुक्ड अप फॉर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ क्रिमिनल लॉ मिलता है. देन रैंकिंग वाज अ मेजर पार्ट ऑफ माय क्राइटेरिया बिकॉज मेरा मिरांडा और कैंपस लॉ सेंटर रहा है. हाँ, उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं यू हैव टू मेंटेन द लेगेसी. तो टॉप लॉ कॉलेज ही होना चाहिए. सो इन दैट सेंस द ऑप्शंस वर वेरी फ्यू बिकॉज जो ये सारे क्राइटेरिया मैच करे कि स्कॉलरशिप शुड बी गुड ऑल्सो या शुड बी टॉप रैंक. हाँ, क्रिमिनल लॉ ऑल्सो. सो बट वंस आई फिगर दैट आउट बहुत टाइम लगा वो ये सब कुछ करने में बिकॉज यू नो एवरीबडी वाज लाइक कि कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना. बट स्पेशलाइजेशन में आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ क्योंकि आई नो LLM कितना डिफ़िकल्ट. पीपल टोल्ड मी अबाउट इट एंड अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो मुझे पसंद नहीं है देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट, उसमें फंसने का. सो मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि कहाँ कहाँ ये सब कुछ अवेलेबल है. एंड देन आई वेंट टू द वेबसाइट. आई चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड आई अप्लाइड अकॉर्डिंगली. ओके. तो मैम उसके बाद में आपको जैसे आपने बोला स्कॉलरशिप वाज अ प्रायोरिटी फॉर यू एंड एज यू टोल्ड मी आपको ब्रिटिश काउंसिल ग्रेड स्कॉलरशिप मिला था. जी. तो हाउ डिड यू बैग इट एंड और क्या स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? सो स्कॉलरशिप में आई वुड से कि मेरा लिमिटेड था एप्लीकेशन का बिकॉज आई वॉज अप्लाइंग इन लास्ट ईयर ऑफ माई लॉ फ्रॉम CLC. काफ़ी स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास लॉ डिग्री हो. अच्छा. जब आप अप्लाई कर रहे हो. ओके. तो एंड अप्लाइंग इज 1 year बिफोर ऑलमोस्ट 1. तो आई वॉज अप्लाइंग अराउंड नवंबर दिसंबर. लॉ डिग्री कहाँ से आएगी, सेमेस्टर भी नहीं हुए दो. सो उस हिसाब से काफ़ी लिमिट हो गए थे जो. एंड व्हेन आई मीन आई स्कॉलरशिप्स आई मीन लाइक हु गिव फुल और सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स. ओके. Then I noticed कि a lot of scholarships were also given with minimum work requirement to like 2 years, 3 years, which I did not have again. So, but then there are like common field scholarships.
So there are external scholarships and internal scholarships. Okay. Internal in terms of जो university है वो provide कर रही है. ठीक है. So the university might be giving, तो वो तो university का discretion पे है. I mean the criteria and all वो सब कुछ website पे होता है. ठीक है, ठीक है. So you can go, you can check कि इस साल वो law में scholarship दे रही है कि नहीं दे रही. तो could be कि LLM and criminal law में ना दे रही हो, Yeah. किसी और LLM में दे रही हो, उसका ये. तो ये internal हो गया. And this British Council one is external, which is an agency, अलग से institution, but they have tie. So what great scholarship is, they have tie-ups with university in UK. ठीक है. So some amount great scholarship gives, which is usually which was £10,000 in my time, and the university has a discretion कि उसमें वो कुछ add करना चाहती है या नहीं है. Okay. So thankfully University of Edinburgh did the whole tuition fee Oh, and that's everything. great. Yes. Wow, that's great. So but great scholarship का process काफ़ी अलग है normal, because you can't apply directly to great scholarship. Okay. You apply to the university. अच्छा. Then the university after they gave me a conditional offer because मेरा law पूरा नहीं हुआ था. So it was contingent on कि मेरा first division आना चाहिए. Okay. ठीक है. Then they were like कि अच्छा you are eligible for this great scholarship, but how it functions is कि हम internal round करेंगे, तो जितने भी लोग eligible लोग great scholarship के लिए आप हमें अपना application send करो. We will choose one person and we will nominate that person to British Council as Our requirements. yeah. Okay. हाँ. Okay. So I applied to the university first. So I think they started in March. Okay. So I applied to university. University ने अपना पूरा application process किया. उसके बाद they were like कि हाँ we selected you as the only, because they have to only send one nominee. Okay. तो like the university आपको nominee बना के British Council में refer करना चाहती है for the scholarship. Okay. Then so you will now get email from British Council about their procedure. Okay. Then उसके बाद मुझे British Council में फिर से उनका email आया कि आप application process कीजिए. So they were questions, SOP, letter of recommendation, वो सब कुछ हुआ. ठीक है. So then again I think they asked for more essays or something. Okay. उसके बाद फिर उनका email आया कि अब interview round होगा. अच्छा इंटरव्यू भी. हाँ, Okay. interview था. But interview के लिए because the panel, there was a panel for interview, but people were from all over the world. Okay. हाँ, so they had taken some British Council people, some people from the university in India, and वो पूरा panel बना and मेरा online interview हुआ था. ठीक है. So once that interview was done, after like 15 days, I got a mail कि हाँ you've been selected for the scholarship. But again, it was dependent on my first division from Contingent. yeah campus law center. So that is how it was. And so yeah, you have to apply for great scholarship through, but कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है और किस कोर्स में करी है, उनकी वेबसाइट पे क्लियरली website पे हाँ लिखा होता है. So तो जब आपको नॉमिनी बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कुछ SOP यू रोट टू देम इज yeah द एंटायर प्रोसेस. हाँ देम. so entire process was done in University of Edinburgh first. Okay. And then they you then- nominated me. They selected one person, that was me, and they nominated because वहाँ पे they see as institutions. Yeah. कि उन्हें इन सारे institutions में से एक इंसान को इंसान को देना है, तो वो पहले institute अपना best इंसान send करेगा. Double फिर हाँ exactly. Got it. So आपने अलग अलग SOPs उस पहले उस पर्सपेक्टिव से बनाया होगा, फिर हाँ, इस पर बनाया होगा. That's great. फिर but अगर if somebody wants to go to the UK and study and they did not get scholarship, तो वैसे average cost कितना बन जाएगा? So the fees depends a lot on the university you're going to. Okay. Like if you're going to Cambridge or Oxford, something like that, the fee is like double. The tuition fee is double the normal one. Okay. So I would say on an average 50 lakhs. तो हाँ, because आप जिस सिटी में रह रहे हो आपका लिविंग कॉस्ट उस पर्टिकुलर सिटी का होगा, तो आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट में वो होगा कि आप चेक कीजिए आप उसका लिविंग कॉस्ट कर सकते हैं कि नहीं, विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट फॉर लंडन. तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इट वुड रेंज अ बिट, बट यू शुड कीप इन माइंड 40 to 50 lakhs. ओके. अब मैम सिंस आप इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियसली उसने आपको हेल्प किया होगा, तो कैन यू टेल अस कि उसने आपको लॉ में कैसे हेल्प किया, एंड व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट दैट गुड एट इंग्लिश?
तो how do they cope up? So the first thing was कि I was used to reading. Yeah. मैं हर सेमेस्टर इतनी रीडिंग्स होती थी हमारी, राइट फ्रॉम नॉवेल्स, पोएट्री, जर्नल आर्टिकल्स. तो जब जजमेंट पढ़ने का आया कि हाँ ये केस मैट पढ़ना है, तो आई वॉज नॉट लाइक कि अरे ये इतना सारा है क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है. सो आई नेवर लैक द मोटिवेशन टू रीड. बस ये जजमेंट कैसे पढ़ते हैं ये तो सबको सीखना होता है. तो English literature helped me in a way that it was never too much of burden for me to study the cases. हाँ, extensive reading, recommended readings, या case mat के बाद अगर बुक से और पढ़ना हो तो लगे कि अरे अब ये इतना एक्स्ट्रा, वो कभी नहीं लगा मुझे. And I would say कि हाँ probably मेरा writing style was better because there was, I mean, a certain flow की जो डिफ़िकल्टी शायद लोगों को CLC आने पर हुई होगी, वो मुझे स्टार्टिंग मिरांडा में ही हो गई थी. जब मैंने अपना पहला असाइनमेंट ही दिया वो पूरा रेड होके आ गया मैं तभी समझ गई थी कैसे कैसे चीज़ें चेंज करनी है, क्या नहीं करनी. तो वो एक हेड स्टार्ट था. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश और लिटरेचर बैकग्राउंड जस्ट टू स्टार्ट रीडिंग. And not just judgments, but articles, especially articles हो गया. You can start low कि blog पढ़ लिया छोटे वाले, फिर articles पे गए, फिर papers, and साथ judgments. So judgment I would say is must. Reading judgment definitely. That is to go do in law in any way. But you can start slow with small write-ups, but aim to read. So articles and blogs and you must, because it really opens your perspective. Okay. And when you're writing in future, it shows. क्योंकि आप चीज़ें connect कर सकते हो where which you won't be able to अगर आप सिर्फ judgment पढ़ रहे हो. अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, सारा कुछ, हाँ मतलब तो अगर आप हाँ, so if you're participating in a conversation or even otherwise, it would show कि आपने वो नहीं पढ़ा है या आपका बहुत ही एक लीनियर माइंडसेट है, बिकॉज वो सिर्फ हाँ सिर्फ जजमेंट से होकर आ रहा है या सिर्फ जुडिशियल साइड से आ रहा है, आप सोशियो साइड से नहीं सोच रहे, पॉलिटिकल साइड से नहीं सोच रहे, इसलिए. ओके. तो मैम आप सिंस आपकी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, सो आई वुड वांट टू आस्क दिस स्पेसिफिकली कि पब्लिकेशंस का क्या रोल रहता है, एंड अगर किसी को लिखना है, दे वांट टू पब्लिश एन आर्टिकल, सो हाउ डू दे स्टार्ट कि लिखना शुरू कैसे करें और उसको कैसे स्ट्रक्चर करें और पब्लिश कैसे करें फिर उसे. सो आई मीन बिकॉज अगेन आई कम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, तो मैंने जब पहले लिखा था दैट वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ मिरांडा, बट बहुत ही छोटी सी वेबसाइट थी कुछ जिस पे कोई गॉसिप कॉलम था. अच्छा. हाँ और उस पे उस टाइम पे वो चीज़ें चल रही थी हर जगह, स्कूप वगैरह पे 10 things you should do, then ये वाला. Okay. तो I did that. Okay. Yeah. That's how I got into writing. Yeah. Because a lot of them were paying their interns. Oh. Even remotely. Okay. So Motivation. so that's also motivation. And plus एक बार वही था कि you need an entry. So I started with those kind of posts Okay. initially, but उसके बाद I think I did, obviously the fact that I was doing English honors, I knew कि लिखते कैसे हैं. That was there. That was always there. कि introduction में क्या होना चाहिए, abstract में क्या होना चाहिए, body में क्या होना चाहिए. But I would say even if you don't know, when you read a lot of articles, again there's the importance of reading comes. When you read a lot of articles and blogs, you can pick it up. Even if nobody has taught you this, because ये तो खैर वो भी सिखाते नहीं थे, you would just read and pick it up. Organically, but Exactly. So this is where reading comes important. Now my motivation for writing and publication also came from the fact that I was in first semester of law and एक essay writing competition था. And I was interested in women and laws, gender laws. So I thought ठीक है, national level ऐसे writing competition है, apply कर देते हैं. Very last minute written, but I applied. Then उसके बाद उनका वो था कि the award winners would be, there was going to be an event. Okay. In Delhi only, जिसमें कोई lecture वगैरह भी होगा और वो बाद में awards
विनर को करेंगे. So I just went first year of law. I thought good exposure. So I just went because judges and I think late Ramjeet Malani and all, they were the panelists. So I was just going for that. तो वहाँ पे जब मैं गई तो उसके बाद the winners names were announced and I got second position. Oh, that's great. And I was so surprised and so pleasantly surprised. And I walked on the stage and I got my award from Ramjeet Malani ji. That's great. And he said, he's like, yeah, I've read your article. Keep working. And that worked like a charm as a motivation to a first semester law student. That's great. Yeah, I'm Because sure. I was already into criminal law. He is the criminal law You mein. wanted, you had this love for criminal law. Exactly. You know, Haan. icons. Exactly. And you were like, he's like, I've read it and he liked it. I have a picture with him and I loved that picture of taking that whole thing. So that motivated me. So then initially I gave in a few essay writing competitions only. Okay. And I won quite a few. Uske baad then I moved as in, I did internship in blog writing. Acha. Then where I wrote like one article a week. Then once I was comfortable, then I started writing as a co-author. Okay. So initially my first 2 papers were co-authored with my friend. She was also from English background but not legal. Okay. So there she would pick up the socio side. Oh, that's a very fresh perspective. Yes. So I would pick up the legal side, she would pick up the socio side, and then we would merge it. Yes. And then we would collaborate. That's So yes. So that gave. So initially we wrote like 2-3 like this. okay. And then once I had that confidence कि हाँ कर सकते हैं. Then I went ahead and I did a lot more. But one of the key motivation is I would always write in the area I like. I would not really go for contemporary क्या चल रहा है and क्या because हाँ. because the motivation you need from starting to end now you will not get if you're just doing it for the sake of doing it. Yeah, got it. So I would pick up the places and I would pick up those things which I love and wrote on that. Okay. So But वो भी तो eventually ही पता चलता होगा what you like once you see again I did again. this is why I have a lot of writings in criminal law. Okay. Then I like matrimonial law, so I have a few in family law side. Okay. Gender and law. Okay. So otherwise I have a few in like IPR and all also, but that is because I like IPR as a subject. Okay. So the semester probably I was doing IPR, I wrote one that. So I picked few here and there. Okay. But my major publications are again aligned with my area of interests. I think a lot of us will get motivated out of this because हमें लगता है कि सीधा पढ़ के publications कर दे. तो I think I would say start slow ना, start with a blog. Start with the pick up blogs जो कहते हैं 500 से 800 words तक वाला. Like today also one of my blogs got published actually. That's nice. I received an email of Okay. few. So you still write blogs 500, 800 words. ताकि ठीक है मतलब चलता रहे. I do it because कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसमें नहीं होता ज़्यादा मटेरियल. हाँ. और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं नॉट जस्ट टॉपिक होते हैं आपके पास टाइम नहीं आता. नहीं होता है. हाँ. सो आई नो आई डोंट हैव द टाइम राइट नाउ कि मैं 5000 वर्ड का एक उस लेवल का लिखूं जो मैं चाहती हूँ. तो फिर ठीक है बीच में कुछ छोटा मोटा आई कैन डू इट बिकॉज आई नो फॉर मी 800 वर्ड्स इज नॉट टू मच. Yeah, got it. तो आई कैन हाँ एग्जैक्टली सो आई कैन डू इट. सो डोंट बी लाइक कि हाँ बिल्कुल बेस्ट पेपर में बेस्ट पब्लिकेशन ही देना है. स्टार्ट स्लो, इट्स फाइन. Yeah. And then when you find better publications, start removing those from your CV. अच्छा मैम, आपने जुडिशियल इंटर्नशिप किया है दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला के अंडर, एंड आपने जुडिशियल क्लर्कशिप करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. तो दोनों कोर्ट्स की वर्किंग में कुछ डिफरेंस आपको लगा था? बहुत कुछ नहीं, बहुत. Okay. Delhi High Court में I was there for around 3 months. I was there for 3 months in Delhi High Court. So the roster was mostly arbitration. अच्छा. And he was on some special, I think, roster for criminal law, which would happen on Saturday. Okay. Some special matters. So क्योंकि usually Saturday को list नहीं होते हैं. But कुछ criminal matters, thankfully मेरे लिए Saturday को आ रहे थे. Weekend. Yeah, weekends पे.
And thankfully, Justice Naveen Chawla is a very sweet person. So he would also encourage me. He would, so take my opinion also as an intern. So that's very encouraging and all. तो in terms of work wise, obviously liability तो कहीं से comparable ही नहीं है as an intern. तो I would go to the law clerks. They would pick up the what would I say, the easy cases for me to make briefs on. And briefs कैसे बनती हैं ये सब कुछ तो every office has a separate thing. There can't be a uniformity in that. Totally on judge's discretion. But it was very, but wait, the roster system was very different. तो उस time पे, this was 2018 I think when I was interning. So thankfully I had good law clerks. He had good law clerks who were very helpful. कि अगर if I'm stuck कि नहीं ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, so they'd be like हाँ difficult वाला छोड़ दो हम कर लेंगे, you take the easy briefs and all. And being a law clerk at Supreme Court of India comes with a lot of responsibilities because briefing again totally depends कि आपको judges कैसे चाहते हैं कि आप उन्हें brief बनाइए, notes बनाइए, but you assist them. So as an intern, I was only assisting in making the briefs or any research notes sir would ask me to do. But as a law clerk, I'm assisting in everything. Okay. That is on judge's table and he wants me to work on. Okay. So in terms of that, it's a great experience because the variety of cases you see, the kind of cases you can't even imagine कि आ सकते हैं आते हैं Supreme Court के पास. And again you get into a lot of reading because दिन आपको इतनी सारी files पढ़नी है, इतनी सारी judgments पढ़नी है, तो it all comes down to read. So you have to start early. Start early because otherwise you hate it. क्योंकि ultimately आपको पढ़ना तो पड़ेगा. Even if you're going as a lawyer, you have to read. Because यहाँ पे एक वर्ड पे वो पूरा केस पलट जाए. You could say law school के आपके juniors को at CLC कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. I would always say that I am not somebody who would ever say कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा. Because quite honestly, people who can fly with that, good for them. I can't. I study. Like seriously, high five on that because people would say कि इस मैथ से क्या पढ़ना है, and I would always be like कि पढ़ना तो पड़ेगा ही ना. Even at later stage पढ़ना तो पड़ेंगे ही. तो हाँ, people would be like कि बिना पढ़े नंबर आ जाते हैं. Lot of times I am like very good for you. But नहीं मेरे तो नहीं आएंगे. I know. I will have to work hard and I'm happy. I'm okay working hard. That's great. अच्छा, तो अगर जब आप जुडिशियल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या लॉ क्लर्क बन रहे हैं तो उसका लिटिगेशन में क्या बेनिफिट रहता है? क्योंकि एक मेरे पर्सनल एक डाउट रहता था व्हेन आई वाज इंटर्निंग कि यार लिटिगेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. मतलब आई डोंट नो, बहुत एक रूडिमेंट्री सा उस टाइम पे थॉट था. तो मेरे को आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि उसके लिटिगेशन में इन इफेक्ट आगे क्या आएगा? सो फर्स्टली आई वुड से कि आप जब किसी लॉयर के अंदर काम करते हो, आपका मैटर होता है, तो आप बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से बनाते हो कि हाँ हमारा केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ऑफ कोर्स आप दूसरा साइड देखते हो बट वो इस पर्सपेक्टिव से कि वो कहाँ लूपहोल यूज करते हैं. हाँ ठीक है, इसमें पर आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप सही हो, वहाँ पे ये प्रूव करना है. बट आप जब एक जुडिशियल लॉ क्लर्क या आप जुडिशियल इंटर्न होते हो तो आपको बहुत न्यूट्रल व्यू पॉइंट डेवलप करना पड़ता है. यू कांट बी लाइक पहले से ही कि हाँ ये सही है ये नहीं है. यू हैव टू गिव देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू लिसन टू देम, and then you have to keep aside your opinions and work according to the law. So your opinions might go somewhere else, but अगर law ये कहता है तो law ये कहता है, उससे इंसान को relief मिलेगा. So developing that, and so I mean my sir used to say कि being a judge is the most you have to do the most non-judgmental thing. Oh, that You know, yes. Being a judge is doing the most non-judgmental thing because you have to be open, you have to be neutral, you have to see everything. So I think that does happen. It must be very difficult. I mean, I would want to know the other side of the table in this existence of, social media and opinions. Everybody is very opinionated, Twitter and everything. There's this just, कहते हैं एक लहर उठ जाती है एक ओपिनियन के बारे में कि यही चल रहा है, यही चल रहा है.
So that also must be having an effect कि अब कैसे और how Not really. See, that is the thing, you know. When you're working there, it's more like कि हमें law पे जाना है. yeah आप opinion तो ठीक है. You can write an article on something. You can critique something. It's a democracy. yeah But I can't do something on the whim of my opinion. yeah I have to, you have to give justice, and then you have to go by the law. So, you know, it's not, I mean, at that level, when somebody has reached that level, I mean, it's a personal opinion that when somebody has reached that level, you know, you are such a learned person, these Yeah. things, stop one. because you know, these will always keep going on, and you have a certain duty, certain responsibility to work with. So that's a very fresh perspective because जैसे मेरे friends हैं they would say judicial internship करना है क्योंकि CV पे अच्छा दिखता है. तो अब ये मुझे भी पता चल रहा है कि I mean जब आप litigation में जाएंगे तो you need to know the balance perspective कि case actually है क्या. फिर उसके बाद आप अपनी चॉइस से डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा मैं एक litigation अगर लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ उसको मुझे किस साइड को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो भी एक आर्ट होनी चाहिए. अगेन मैम आपको कंग्रेचुलेशन एकेडमिक फेलो के लिए एट द NLU दिल्ली. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. तो मुझे आप प्रोसेस बताएंगे. अ लॉट ऑफ यंग पीपल वांट टू गेट इनटू इट कि कैसे हाउ डज वन बिकम एन एकेडमिक फेलो. To become an academic fellow, NLU Delhi की सिर्फ एक पोस्ट थी, and they were specifically looking for somebody in criminal law. That's what the advertisement said on their website, and social media पे भी circulated था. So I think for this one, LLM was a mandatory requirement, and उसके अलावा और भी desirable requirements होती है which you may not fulfill. उसके बाद वेबसाइट पे लिंक थी. आई वेंट देयर, तो उसके बाद आई सॉ कि CV चाहिए, SOP चाहिए, publications चाहिए उन्हें. Then so I gave the links to my publications. Okay. Attached some of those, SOP वगैरह सब कुछ लगाया. Not quite sure if they asked me any questions particular or not, but पूरा वो online process उनका किया. ठीक है. Then I got an email after some time saying you've been shortlisted for the interview. Will you be available at this time? Which I said yes to. Then my first round of interview was online. ठीक है. And then I was called offline on the campus to have a final interaction. And after which I was selected. Okay. So you have 42 publications on LinkedIn. Do you mention all of them or just the selected? I think I highlighted the criminal ones and the ones which I would say at a higher stature according to me. I would highlight those, and thankfully they are most recent ones, because again, abhi if I read what I've written 2 years ago, I hate it. So yeah, I have stopped doing that. I did it because I thought पहले के some blogs को develop कर दूँ into papers, but I read it and I was like, I will hate myself. I will keep doing it. So no. When Ram Jethmalani sir is saying good to you, so that's a difference of years, okay? But still he's saying good, so we can't criticize ourselves like that. No, what I'm saying is, you know, you change, you get better every day. Yeah. So if you read my previous publications, don't judge. I knew you judged you. They called you. The latest one, guys. So thank you so much, ma'am. आपने time निकाला आने के लिए. It was a really fun conversation with you, and I have learned a lot, and I'm sure our audience will also learn a lot from you. You can check out ma'am's LinkedIn. She's very talented, and I think ma'am would be more than happy to help you guys. अगर आपको कुछ भी Yeah, my LinkedIn is full of DMs from people just asking to review and help and all. But please don't ask me questions that you can find on a website. that's Because like people are texting me, PhD कैसे करते हैं, मैंने खुद नहीं करा. No, I can't really help you. या इस एक्सपीरियंस में जो भी होगा हाँ उसमें मैम विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प बिकॉज देन आपने हमारी प्लेटफॉर्म में भी आए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. दैट वाज रियली ग्रेट.